Good afternoon, everyone. We are hosting a program of certification for our ex-interns as well as our interns who are returning from Supreme Court of India under internship of Advocate Sunita Sharma. The program will initiate with certificates of distribution and the lunch. Thank you. Thank you. Now let us welcome our two interns who are returning from Supreme Court of India. Let's felicitate them, Geeta ma'am and Mavish. Have a big round of clap. Both the intern Geeta and Mavish, they have completed their internship from under AOR from Supreme Court of India, Advocate Sunita Sharma. They came today only, and I am happy they joined today to our company again, rejoined. So I welcome both of them. Thank you. Thank you. Now I am inviting top performer in legal division for the black desk, Ayaz Syed. Now let's welcome Firaz Sheikh, the top performer in legal division of Black Desk. Sir. This is for you. So मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जनवरी 2024. It was a great experience under the guidance of Sanjay sir, and it was a great experience. We learned many things, and overall it was a really nice experience. Let's welcome Safa for the black desk advocate and solicitors, and the another certificate for Sanjay Saraf and Associate. दूसरा तुमने कंप्लीट किया ब्लैक डेस्क की तरफ. बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट. Now let's welcome Azra Kram who has completed her certification from Les Forensica. Hazra Khan. यस सर, ये हमारे टीम की सबसे बेस्ट परफॉर्मर रही है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, इसने एक केस को स्टार्ट टू फिनिश तक किया है. ड्राफ्टिंग करना, आर्गूमेंट करना, फाइलिंग करना, और सारा काम से खुद किया. दैट दिस इज बिग क्लैप फॉर हर. Now I am inviting my friend Mr. Anwar Khan for the Lex Forensica. यस, दिस इज फॉर यू. आ जाओ. Now let's welcome Sayyada Bojani from Les Forensica. Let's welcome for Miss Kalpana Kamble for Lex Forensica. Now let's welcome Akanksha Yadav from Lex Forensica. Now let's welcome Best Legal Researcher Geeta ma'am from Black Desk Associate and Solicitor. गीता मैम को दिखा दो. Okay, so now let's welcome my dearest friend Ankit Rao from Lex Forensica. I don't. यस, मैं दो शब्द अंकित के बारे में बोलना चाहूँगा. बहुत से इंटर्न आते हैं और जाते हैं हमारे पास, और कुछ की परफॉर्मेंस वाकई में बहुत ही उम्दा. खुद करना, जैसे पहले कुछ हमारे जो इंटर्न थे, दे नेवर डिपेंड ऑन मी. नहीं सर, आपको नहीं करना, मैं खुद काम करूँगा या करूँगी, आपको कुछ भी नहीं करना. तो ऐसे 6-7 हमारे पास ऐसे इंटर्न हैं. और अंकित ने भी ज्वाइन किया. तुम लोगों को मालूम है, एक फाइलिंग के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है. हमको रीट पिटिशन फाइल करना, उसकी सबसे पहले तैयारी करो, ऑब्जेक्शन रिमूव करो, उसके सारे पेजेज चेंज करो. एक बार गड़बड़ हो गई, तुम्हारा ऑब्जेक्शन रिमूव करके फिर सबमिशन करो, फिर नंबरिंग होगी. राइट. तो एक केस हमारे पास आया था जिसमें बेल हमको लेनी थी, और अंकित को ये ड्यूटी दी गई थी कि ये काम उसको खुद करना है. उसके पहले उसका 0 एक्सपीरियंस था, लेकिन बांद्रा कोर्ट के अंदर इस अंकित गया और वहाँ पे बेल की परमिशन की पूरी प्रोसीडिंग्स इसने की, और वो भी शाम के 5 बजे के बाद. तुमको मालूम है 3 बजे बंद हो जाता है, लेकिन आफ्टर 5 PM ही की. और उसके बाद बहुत से ऐसे काम किए जो हम लोग नहीं कर पाते, हमको मुश्किल लगता है. मेरे लिए भी मुश्किल है, बाकी लोग के लिए मुश्किल है, लेकिन इसने बखूबी ईजिली इस काम को किया. तो उसके लिए मेरी तरफ से इसके लिए मिस्टर अंकित के लिए
बेस्ट विशेष फॉर देयर हेल्थ। थैंक यू। कुछ बोलना है? यस। यार अंकित, क्या कुछ शेयर करना चाहोगे? इसे तो अभी बोल नहीं पा रहा हूँ, बट ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप है और मुझे पता नहीं कोर्ट प्रोसीडिंग सारी चीज़ें क्या होती हैं और एक एडवोकेट कैसे काम करता है मुझे वो भी नहीं पता था। बट मैं थैंकफुल हूँ सर का कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इस फॉर्म के साथ जुड़ने का और सर के साथ सीखने का। तो अभी शुरू हुआ है, तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बस थैंक यू सर। स्टार्ट जो हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले एज ए लीगल हेड ताजिन ने ही मुझे ज्वाइन किया था और इसके काफ़ी कॉपरेशन मुझे रही। हम लोग तो कोर्ट में रहते थे, लेकिन ऑफिस संभालना, कोर्ट का काम करना, ये सारे ताजिन मैम ने ही किए। तो बिग क्लैप फॉर द ताजिन। दो न्यू इंटर्न है, हाँ, वेदांगी और सिमरन। Now we are going to facilitate our company's first legal aid, Tazin Khan ma'am. अभी हाजरा के बारे में बताया था कि हाजरा ने एक टॉप परफॉर्मेंस दिया था और फ्रॉम स्टार्टिंग टू जैसे अंकित ने किया, लेकिन अंकित से एक कदम आगे क्योंकि ड्राफ्टिंग भी इसने खुद की थी। तो इसका एक टॉप परफॉर्मर का इसका सर्टिफिकेशन बाकी है। आज प्रिंट होने में डिले हुआ, तो वो इज अ टॉप परफॉर्मर फॉर दिस केस। थैंक यू फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। Thank you, sir. Yes, I'm happy to announce our brilliant student who completed LLB in this form, Mr. Muhammad Yasin Sheikh. I invite Mr. Yasin Sheikh on the stage. Now, this is the first certificate goes to Mr. Yasin Sheikh from Black Desk Advocates and Developers for the outstanding legal performance with the gold medal. This is for the Mr. Yasin Sheikh. Yes, आपको जाना नहीं है स्टॉप। Yes, second performance certificate again goes to Mr. Yasin Sheikh for the best performance of the year. Yes. Now, best of. This is the final. This is something related to the forensic science. During his tenure, he also learned what is the forensic science. And in short term, he performed well. He understood what is the forensic science. That this is from the Lax Forensica again goes to Mr. Yasin Sheikh. Can you say something about it? Firstly, I would like to thank Mr. Sanjay sir and Dr. Sanjay sir. I was belonging to the computer science second graduation of computer science. And that was the time of Corona. I was being here as an office manager. So used to motivate me why I should take legal profession as a profession. So I got to think about it and I have a good attorney with myself. And sir has taught me it's a good profession you should have taken and you have that also. So by believing on his words, so after believing on his words, I just given thought that yes, I should be along here. I have taken admission under him only. We are studying in the same college. And he also helped me during my entire graduation in BSc Computer Science in LLB. And now finally I have become an advocate under him only. And he is the whole and sole reason I have become an advocate now. And I wish my journey also along with will always align with Advocate Sanjay sir during my whole life. And I am very thankful to him and other my colleagues and my friends who supported me in this. And yes, cheers to everybody who have made this lead across here. Yes. Now this certificate goes to most talented girl, Sayyed Hiba. I invite Hiba to the stage. Kindly come. This award is giving for his exceptional legal contributions. The girl Hiba who performed well before the High Court. She is the girl who always ready to work the High Court and take the challenge. Yes, sir, मैं करूँगी, मुझे करना है तो मैं अकेले करने वाली हूँ. As she has done a lot of work for the High Court, she
she definitely deserves for this exceptional legal contribution from Black Desk Advocates and Solicitors. Yes, Shiva. With the gold medal, I wish all Shiva for his best. Now I am introducing our new intern, very new, 2 days, Miss Vedanti Sinde, who recently joined to our firm, but in 2 days he got some opportunity to visit the court, as well as he also attended our certificate program. I would like to invite Vedanti to share her experience, what he learned in 2 days. Now this is the big moment. Why this moment? Because these organizations function, how our organizations function day by day, and how our interns are working day by day. The behind the scene, the girl who is not other than Ruhi Ansari. Advocate Ruhi Ansari. I invite Ruhi Ansari on the stage. I am happy to announce this award, top performer, and this award was given when she was not holding the post of the legal head. For that, when she was working as an intern, that time she performed. Afterwards, she held the post for the legal head. I am very much feeling proud to giving this award to Ruhi Ansari. With this medal, which she deserves, a big clap.